Hello, dear learners. Welcome back to our news channel. Today we have the grave threat from AMR. What is AMR? It is antimicrobial resistance. All right, students, before we dive into the issue, let's start by understanding what a microbe is. Okay, microbe. माइक्रोब का मतलब क्या होता है सबसे पहले हम यहां से समझेंगे. ओके, सो microbes are tiny living organisms that are so small you can only see them under a microscope. है ना, जो इतने छोटे होते हैं जिसे आप सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हो. दे इंक्लूड बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई एंड इवन सम पैरासाइट्स. Students, some microbes are helpful, like the ones that help us digest food. But there are other category of microbes that can cause diseases. Now, when we use medicines like antibiotics, आपको कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ होगा तो डॉक्टर ने आपको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब किया होगा, राइट? फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरिया कॉजिंग डिजीजेस. तो जो भी डिजीज एक बैक्टीरिया की वजह से होती है, यानी कि बैक्टीरिया, जैसे कुछ डिजीजेस होती हैं वायरस की वजह से, लाइक कोविड was caused by a virus, right? On the other hand, there are certain set of diseases which are caused by bacteria. So for those diseases, doctor prescribe us medicine called antibiotic. हम क्या होता है कि जनरली हम सारे मेडिसिन को एंटीबायोटिक कह देते हैं. नो, जो वायरस के अगेंस्ट में काम करती है मेडिसिन उसे कहा जाता है एंटीवायरल. सिमिलरली, जो पैरासाइट्स के अगेंस्ट में करती हैं डिजीजेस, जो मेडिसिन यूज करते हैं उनको कहा जाता है एंटी पैरासाइट्स. Similarly, we have antifungal, and for bacteria, we have antibiotics. Now, when we use medicines like antibiotics to treat infection caused by harmful bacteria, sometimes what happens in the process, those microbes, those bacteria change or evolve in a way that makes the medicine stop working. This is called antimicrobial resistance. इसी को ही कहा जाता है antimicrobial resistance. Okay, so students, in simple terms, antimicrobial resistance happens when microbes become strong enough to resist the medicine and what kind of medicine that was used to kill them. This means infection can become harder to treat and people might stay sick for longer or get more seriously sick. Here in the news article, हम क्या देख रहे हैं कि instances of antimicrobial resistance is a growing problem in India. Who is responsible? What can be done? इसीलिए सबसे पहले हम एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में समझ रहे हैं. अब इस आर्टिकल को अगर हम इस पैराग्राफ पर जाएंगे जहां पे मेंशन है व्हाट इज antimicrobial resistance, is the same thing that I have mentioned you now. It's a condition where a pathogen acquires the ability to survive and cause infection even in the presence of an antimicrobial drug. मतलब आप मेडिसिन भी खा रहे हो लेकिन वो बैक्टीरिया अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया है कि इट इज नाउ एबल टू सर्वाइव the effect of medicine. So AMR मतलब antimicrobial resistance ही, it is the result of evolution of microbes. यानी कि microbes are now becoming strong enough to resist the effect of medicine that is used to kill them.
right? So this evolution is why is this happening? Because we are seeing that it's now becoming a global problem, because the more microbes resist, the fewer options we have to treat infections, and it makes it harder to control diseases. अब देखो ना, अगर कोई मेडिसिन है, वो काम नहीं कर रही है, उसके बाद में हम उसको स्ट्रॉन्गर मेडिसिन देंगे, फिर और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मेडिसिन करेंगे। लेकिन हमारे पास मेडिसिन की अवेलेबिलिटी और लिमिटेड ऑप्शंस है ना, कितने ज़्यादा ऐसी कैटेगरी ऑफ मेडिसिन है जो हम दे सकते हैं। सो दैट इज़ व्हाई दिस इज़ अ ग्लोबल कंसर्न। अब यहाँ पर जो आप इस पैराग्राफ में आप देखेंगे, तो यहाँ पर एक और चीज़ मेंशन है कि AMR and consequently the creation of superbugs, right? Superbugs क्या है? Just now we have learned about microbe causing diseases. Sorry, disease causing microbes, है ना? तो microbes की वजह से ही disease हो रहे हैं। तो ये जो microbes है, when they evolve themselves, they gain strong power to resist medicine, right? अपने आप को स्ट्रांग बना लिया है, अपने आप को मेडिसिन के अगेंस्ट इतना ज्यादा स्ट्रांग बना लिया है दैट दे हैव गेन सम काइंड ऑफ पावर टू रेजिस्ट द मेडिसिन, राइट? सो दैट इज व्हाई ये माइक्रोब्स, अब माइक्रोब्स तो नहीं रहेंगे, तो इनको हम कहते हैं सुपरबग्स। ऑल राइट, they are now called as superbugs because they have evolved themselves to resist the effect of medicine, right? And the uh, the whole health community is concerned about these superbugs only. Now we'll just understand what are the causes. Causes क्या है आखिरकार? ये antimicrobial resistance, why is it developing? See, here in this paragraph you can see the causes, right? ये देखो यहाँ पे, यहाँ से पूरा इसमें पैराग्राफ में लिखा हुआ है कॉजेस। आपको मैं एक ओवरव्यू बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, द नंबर वन कॉज इज यूजिंग ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। सबसे बड़ा जो कॉज है वो है ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। सी, यूजिंग एंटीबायोटिक्स टू frequently, or even when they are not necessary, like for viral infection, gives bacteria more chances to develop resistance, right? अगर आपको वायरल डिजीज है और आप फिर भी एंटीबायोटिक खाओगे, तो उससे क्या होगा? जो बैक्टीरिया होंगे वो और ज्यादा इवॉल्व हो जाएंगे, वो स्ट्रांग बन जाएंगे, क्योंकि वो तो हम अननेसेसरी खा रहे हैं एंटीबायोटिक जब हमें जरूरत भी नहीं है, right? And sometimes, we have seen the cases where patients don't complete their full course of antibiotics, right? अपना एंटीबायोटिक्स का एक पूरा कोर्स होता है, जैसे डॉक्टर हैज आस्क्ड यू टू take antibiotics for 4 days, but on the third day you are seeing that your symptoms are going away. So this doesn't mean that you stop taking antibiotics, because you have to complete your full course. And why? Because ultimately what happened, that some bacteria, it may survive, and they can develop resistance, they can evolve themselves and develop this resistant mechanism in themselves. So that is why it is very important. Doctor always asks you to complete the full course. All right. And another case we have seen is antibiotics are sometimes used in farming to promote animal growth. राइट? एनिमल ग्रोथ को भी प्रमोट कर रहा है। जैसे कि कभी कभी हमने देखा है कि स्पेशली इन पोल्ट्री फार्म में क्या होता है कि antibiotics are used on hen, and they are used for broiler chicken, so that they can evolve, they can gain weight quickly, okay? And even in cows and buffaloes, they are being injected with antibiotics so that they can produce more milk. So these are the things and what will ultimately happen now, because we are the one who are going to consume these animal products. So diseases, it can lead
to resistant bacteria spreading through food. Even food, even through food, it can spread to us, right? And in this in this paragraph, yes, here it's written that instead of we have to prevent infection so that people do not feel the need to take antibiotics. So sometimes we have also seen that in places like hospitals, if infection control is weak, resistant bacteria it can spread easily between patients के बीच में भी easily spread हो सकता है अगर there वहाँ पे poor infection control है. And students, also the development of new antibiotics is slow, so we rely on old ones that bacteria are more likely to become resistant to. है ना, तो अब lack of also lack of new antibiotics. And resistant bacteria, it can spread from one country to another quickly due to increased travel and trade. So that is why global health community is so much, in they are so much concerned about the spread of AMR, because it can spread quickly from one country to another, right? And we have seen the strong many cases of superbugs, of these superbugs antimicrobial resistance in cases like tuberculosis, TB, है ना? तो टीबी के बारे में हमने एक न्यूज़ में भी कवर किया था कि कैसे स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट बैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस में डेवलप हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो डिज़ीज़ है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है पेशेंट्स में, तो ट्रीटमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ रही है। And obviously we need to emphasize on cleanliness and improving hygiene through measures like frequently washing hands whenever you come into contact with any patient. And so instead of just relying on a strong dose of antibiotics, what we can do, we always say there's a famous saying that prevention is better than cure. So what we can do here, it is mentioned that we have to prevent infection in the first place so that people do not feel the need to take antibiotics, right? And what is the impact of antimicrobial resistance? What is the impact? See, obviously the number one impact is common infections like pneumonia, tuberculosis, and urinary tract infections can become untreatable or take longer time to heal. इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है बॉडी में क्योंकि मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, कि ये जो डिजीजेस होते हैं ये ट्रीट ही नहीं हो पाते हैं, राइट? Here are some of the examples that are mentioned. The most common resistant pathogens in India, the three most common pathogens are, जैसे ई कोलाई है, न्यूमोनिया का है, और भी है जैसे ई कोलाई, इट demonstrated a decrease in susceptibility to most antibiotics, है ना? और भी हमने देखे हैं जैसे इंस्टांसेस, स्पेशली जैसे मैंने आपको अभी बताया ट्यूबरकुलोसिस में देखा है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में देखा है, इवन निमोनिया में भी देखने को मिला है कि जो बैक्टीरिया है उसने रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है. So obviously, infections will become harder to treat, and AMR leads to longer hospital stays. So it says that the need for more expensive medicines and it requires more intensive care. Ultimately, it will increase the medical cost. So what about the people who are not able to afford the treatment? Right? We have all sorts of people from different backgrounds in our country. So if it is going to spread AMR, if it is going to spread, so it will increase the medical cost, and ultimately they will fall into poverty and higher mortality rates. People may die from infections that were once easily treatable because there are few effective antibiotics available. जब पहले जब first antibiotics, now this is a question for you and you are all going to write it down in the comments below, that which was the first antibiotic discovered in the medical history. कौन सी थी पहली antibiotic जो discover किया गया था? Now this is a homework for you. You are all, those who are listening to this video, you are all going to write it down in the comments below, right? Now, yes, so अगर ज़्यादा एंटीबायोटिक्स फेल होने लग जाएंगे तो अवेलेबल ऑप्शन बहुत कम रहेंगे. सो
there will be less effective antibiotics available, and obviously people may die from infections. And there are some certain medical procedures which require surgeries, uh, like cancer treatments are there, and there are also organ transplants. So these kind of procedures, these kind of medical procedures, it rely heavily on antibiotics to prevent infection. But if a person who is about to get surgery or a cancer treatment or organ transplant for that matter, if they contract AMR, it makes these procedure riskier. All right. And with more people falling ill and staying sick for longer, it it will ultimately decrease the productivity of a country, है ना स्टूडेंट्स? क्योंकि अगर ज्यादा लोग बीमार ही रहेंगे तो कंट्री में कौन काम करेगा? आप एक ऑफिस में कैसे जाएंगे? और अल्टीमेटली एक कंट्री की इकोनॉमी भी सफर करेगी. And AMR also, it affects everyone globally. And without new medicines, we risk returning to a time when minor infections could be deadly. एक टाइम ऐसा भी था कि जब छोटे छोटे इन्फेक्शन से लोगों की डेथ हो जाती थी, लेकिन एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी के बाद ये सारी बीमारियां, ये सारे इन्फेक्शन प्रिवेंटेबल हो गए. बहुत से ऐसे केसेस देखे थे 16 17 सेंचुरी में जहाँ पे निमोनिया की वजह से लोगों की डेथ हो गई थी. सिंपल बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से लोगों की मास डेथ हो जाती थी. तो एंटीबायोटिक्स वाज अ गेम चेंजर. बट अगर दोबारा से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से अगर एंटीबायोटिक्स फेल होने लग जाएंगे, तो हमें वो सिचुएशन भी हम देख सकते हैं जहां पर एक छोटे से माइनर इन्फेक्शन की वजह से लोगों की डेथ हो रही है. So AMR is a serious challenge, and to tackle antimicrobial resistance, a combination of action is required at multiple levels. Not just it's the responsibility of government, but it requires a multi-pronged approach, and it requires a combination of actions which can be conducted at multiple levels like individual, healthcare, agriculture. First of all, we as a people, we as a common people, what we can do, we should only, students, you also, you should only use antibiotics when it is prescribed by a doctor, and never for a viral infections like cold or flu. आपको सबसे पहले डॉक्टर के पास चेक कर लेना चाहिए कि आपको वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है. कई बार क्या होता है, वायरल इन्फेक्शन की जगह लोग एंटीबायोटिक्स खाने लग जाते हैं. तो एक तो ट्रीटमेंट, एक तो जो फ्लू है वो ट्रीट नहीं होता, और दूसरा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं. So for us, what we can do, we should only use antibiotics when it is prescribed by a certified health professional, and always complete the full course of antibiotics even if you feel better. हम ठीक भी लग रहे होंगे तो भी we have to complete the full course of antibiotics, and avoid self medicating with leftover antibiotics. कभी आपको एक लास्ट ईयर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ था तो आपको मेडिसिन दे दी थी, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था, एंड आपके पास अभी भी है तो आपको सेम सिम्टम लग रहा है, तो अगर आप उसको खाना शुरू कर दोगे तो ऑल्दो क्या हो सकता है कि वो ट्रीट हो जाए, ठीक हो जाए, लेकिन you will be at the verge of contracting antimicrobial resistance. Similarly, for healthcare providers, you can, whenever you go to a doctor, you should ask them. First of all, यहाँ पर एक और चीज मेंशन है कि many Indians have a tendency to pop an antibiotic for a fever without even checking if the fever is caused by a bacterium. An antibiotic is of no longer use for viral infections such as influenza, but consuming it can drive up resistance in the population. Yes, तो बहुत से इंडियंस की ये टेंडेंसी होती है कि एंटीबायोटिक खाने लग जाते हैं विदाउट इवन चेकिंग इफ द फीवर इज ऑफ बैक्टीरियल और वायरल इन नेचर, राइट. और कुछ लोग क्या करते हैं कि many of them find it difficult or expensive to go doctor for a simple sickness. तो वो क्या करते हैं, ओवर द काउंटर जाके, यानी लोकल केमिस्ट के पास जाएंगे, बोलेंगे कि ये सिम्टम्स है, तो वो केमिस्ट क्या करता है, एंटीबायोटिक्स दे देता है. बट doctors are saying we should never
never consume antibiotics without the prescription of doctor, right? And what we can do instead, we have to prevent infections so that people do not feel the need to take antibiotics. हमें पहली बात तो हमें इन्फेक्शन को ही रोकना चाहिए। कैसे इन्फेक्शन को कैसे रोका जा सकता है? हियर इट इज मेंशन्ड। जैसे क्या-क्या किया जा सकता है कि instead it can be achieved through vaccination and through simple things like maintaining hygiene, है ना? हाइजीन मेंटेन करने से, regular hand washing, maintaining hygiene in hospitals, schools, and homes, it can prevent infection. See, here it is also written this can be achieved through improving hygiene and measures like frequently washing hands. And it can also be achieved through vaccination. For example, for pneumonia, influenza, for the elderly, it can reduce incidence of pneumonia. But so promoting vaccines can reduce the need for antibiotics by preventing bacterial infection, right? And healthcare facilities also should follow strict hygiene and sanitation practices, uh, so that it cannot spread between the patients, एक patient से दूसरे patients के बीच में ना फैले. Obviously, for the government, what can be done is to track the governments and healthcare organization, they need to track how AMR is spreading and to respond effectively. If the detection is early, it will allow for quicker response and management. And another thing is misdiagnosis. The one which we have seen in India is uh, the prescription of antibiotics made by some doctors is without the uh, diagnosis, without the full diagnosis, right? एंड सिम्टम्स के बेसिस पे कई बार क्या होता है, मिसडायग्नोसिस हो जाता है, तो उस पर एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब किया जाता है, विच जो कि जिसकी जरूरत भी नहीं होती है, राइट? तो मिसडायग्नोसिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज of spreading AMR. What also can be done is uh, government should promote research and development, and pharmaceutical companies to invest in research and development of new antibiotics, right? And another thing which should be done is limiting antibiotics in farming, like reducing the use of antibiotics for growth promotion in animals, and ensure that they are only used for treating infections in livestock, right? And food industry should also ensure that they are adhering to safety standards to prevent resistant bacteria, so that it will not spread through the food chain. And most importantly, we as a public, we need to educate ourselves. And you can also, talk about it to your friends and to your teacher, and in the family. More the people are informed, the dangers of overusing bacteria will be reduced. And we should also adopt healthy behaviors मतलब क्या होता है, maintaining distance from a person who is having uh, bacterial infection, regular washing your hands, maintaining hygiene. And मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अवेयरनेस इज द की, है ना? अवेयरनेस इसकी सबसे पहले तो लोगों को पता ही नहीं होता एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे डेवलप होता है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें एड्रेस करने की जरूरत है। सो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ऑल्दो इट्स अ ग्लोबल चैलेंज, इट अफेक्ट्स ईच ऑफ अस, बट टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, है ना स्टूडेंट्स? So by using antibiotics responsibly, maintaining good hygiene, staying informed, we can help slow down the spread of resistant microbes. Remember, every action counts, whether it's finishing your medication as prescribed or supporting efforts to improve health system. So let's work together to protect the medicines that keep us healthy today and ensure a safer, healthier tomorrow. Thanks for watching, and don't forget to share what you have learned.